हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग कीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। LIC Housing Finance Limited with a target price of rupees 380. The current market price of LIC Housing Finance is rupees 345. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। LIC Housing Finance Limited incorporated in the year 1989 is a large cap company having a market capital of rupees 19,004.68 crore, operating in NBFC sector। एक NBFC कंपनी है ये। LIC Housing Finance Limited की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट include interest, fees and commission income and income from financial services for the year ending 31st March 2021. Okay. Financials for the quarter ended 31/12/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 5,078.68 crore, up 7.53% from last quarter. Total income of rupees 4,722.93 crore and up 3.09% from last year same quarter. Total income of rupees 4,926.65 crore. Company reported net profit after tax of rupees 771.32 crore in latest quarter. Okay. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 45.24% stake in the company as of 31st December 2021, while FIIs own 23.46%, DIIs 14.92%. Okay. So guys, a short term delivery LIC Housing Finance Limited with a target price of rupees 380. The current market price of LIC Housing Finance Limited is rupees 345. Okay, next stock. Okay, so guys, next stock है Mahindra and Mahindra Limited. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके। Mahindra and Mahindra with a target price of rupees 1,075. The current market price of Mahindra and Mahindra is rupees 746. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। Mahindra and Mahindra Limited incorporated in the year 1945 is a large cap company having a market capital of rupees 94,737.49 crore, operating in auto sector। एक ऑटो कंपनी है ये। Mahindra and Mahindra Limited की प्रोडक्ट revenue segment include automobiles, light, medium and heavy commercial jeep, passenger car, sale of services. Other operating revenue for the year ending 31st March 2021. Okay, financials. For the quarter ended 31/12/2021, the company reported a consolidated total income of rupees 23,785.49 crore, up 9.43% from last quarter. Total income of rupees 21,735.96 crore and up 8.77% from last year same quarter. Total income of rupees 21,867.78 crore. Company reported net profit after tax of rupees 2,066.60 crore in latest quarter. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 19.47% stake in the company as of 31st December 2021, while FIIs own
44.36%, DIIS 22.11%. Okay. So guys, short term delivery, Mahindra and Mahindra with a target price of rupees 1075. The current market price of Mahindra and Mahindra Limited is rupees 746 by Mahindra and Mahindra. Target price 1075. Okay, next stock. ओके सो गाइस नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके लेट्स मूव। Bharat Forge with a target price of rupees 950. The current market price of Bharat Forge Limited is rupees 636. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। Bharat Forge Limited incorporated in the year 1961 is a large cap company having a market capital of rupees 29,560.22 crore. Operating in auto ancillary sector, एक ऑटो कंपनी है ये। भारत फोर्ज लिमिटेड की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड स्टील फॉर्जिंग, स्क्रैप, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जॉब वर्क, डाइज एंड टूल्स एंड विंड मिल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021. ओके, फाइनेंशियल financials for the quarter ended 31/12/2021. The company reported a consolidated total income of rupees 2,428.64 crore, up 20% from last quarter. Total income of rupees 2,423.90 crore and up 37.90% from last year. Same quarter, total income of rupees 1,761.11 crore. Company reported net profit after tax of rupees 424.48 crore in latest quarter. Okay, promoters FII holdings. Promoters held 44.76% stake in the company as of 31st December 2021, while FIIs own 23.36%, DIIS 20.02%. Okay. Okay, so guys, एक short term delivery by Bharat Forge with a target price of rupees 950. The current market price of Bharat Forge Limited is rupees 636. Okay. सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, बोलो राधे राधे।